Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Today, we're really digging into something that I think genuinely reshapes how we look at organizations. Yeah, it's quite foundational stuff. And what we're going to unpack for you is based on a large language model summary of a really important recent article. That's right. The article itself is called Addressing Marginalized Populations in Management Research. And it was published in Administrative Science Quarterly ASQ, which, as many of you will know, is a top-tier FT50-listed journal. Really prestigious. Absolutely. And the authors behind this significant piece are Damon J. Phillips and Aruna Ranganathan. Right. Damon Phillips, he's the Robert Steinberg Professor at Penn's Wharton School and also connected with the Annenberg School and Columbia Business School. A real heavyweight, an organizational and economic sociologist. Definitely. And Aruna Ranganathan, she's an associate professor over at UC Berkeley's Haas School of Business. Her work often dives deep into the experiences of workers in low-income jobs, particularly in India. Really fascinating research. Yeah, that combination of perspectives is, I think, part of what makes this article so compelling. It really is. And, this piece offers such crucial guidance, especially, I'd say, if you're maybe newer to academic research or perhaps just starting out on your own research path. How so? What's the core challenge it presents? Well, it fundamentally questions how we've traditionally approached management and organizations. It's really pushing for a broader lens. There's a line in their deeper message that really struck me. They talk about how reading deeply affirms that wisdom, empathy, and human understanding. Well, they aren't things you optimize. They're lived. That's powerful. It speaks volumes about the kind of engagement they're calling for. It really does. And look, whether or not you subscribe to this channel, we really do encourage you, find some time to read the original article. It's thoughtfully crafted. It's rigorous. We've put the link in the show notes. Please do. It's worth a read. So the core argument, what they're really saying is this. Organizational theory has, for a long time, focused mostly on elites. Elites. And this has maybe unintentionally created a pretty narrow view of how organizations actually work, Right. So they're advocating for a much broader, much more inclusive focus, specifically on marginalized populations, arguing that this is how we'll genuinely advance our understanding. Okay, so let's unpack that a bit more. This elite focus. What exactly does that mean in research terms, and why is it actually a problem? Well, the article defines elites, basically, as people with, disproportionate control over or access to resources, people in positions of advantage. Like CEOs, top managers, founders? Exactly. Think C-suites in big Fortune 500 companies. Now, studying them has given us some insights, obviously, but it's also resulted in a really limited perspective on the full picture of organizational dynamics. Because it misses out on. It consistently overlooks the very real barriers, the stigma, the discrimination that marginalized groups encounter daily. So it's like we've built our theories on a very specific and maybe unrepresentative foundation. That's a great way to put it. Most management theory is built on studying these elites in large corporations, but globally, that's a tiny, tiny segment of the population. Which really calls into question the generalizability, right? Yeah. How widely these theories actually apply. Precisely. You can't understand the whole forest by just studying the tallest trees. It limits how broadly our findings apply. And it sounds like this isn't just a theoretical blind spot. It actually creates problems within the research field itself. Oh, absolutely. It creates real barriers for scholars, especially emerging ones who want to study marginalized populations. Their work might get labeled as atypical or niche. Making it harder to get published in those top journals we mentioned earlier. Exactly. And even when marginalized groups are studied, it's often kind of piecemeal, like focusing on just one thing, say gender diversity, but only among elite women executives. Instead of looking at, say, women working in low-wage factory jobs or how different identities intersect. Precisely. The authors make a strong case for needing an intersectional approach, looking at how multiple factors like race, class, gender, and so on overlap and interact. That makes a lot of sense. Okay, so if this narrow focus is so limiting, why has it persisted? What are the challenges in shifting the focus towards marginalized populations? Well, there are a few key things.
One huge factor is just data availability. Archival data, the stuff that's readily available, it often represents these elite contexts. It's just easier to get your hands on. Okay, so convenience plays a role. It does. And then you have the journal review processes, the rigorous, of course, but sometimes that very rigor can maybe inadvertently discourage research that deviates too much from established norms. Like a sort of inertia in the system? Kind of. It can feel risky to study something unconventional. Plus, think about the stakeholders of business schools, often elites or those aspiring to be. Their sense of what's relevant research can subtly shape the agenda, too. Interesting point. And are there practical issues with data collection itself? Yes, definitely. Things like standard survey instruments, like ERT scales where you rate 1 to 5, they might not always be culturally relevant or easily understood by non-elite groups. So the tools themselves might not fit the context. Right, which can lead to less accurate or even misleading data. It's a real methodological challenge. Okay, so the call to action here is pretty clear then. It's about a renewed push for inclusivity, for diversity in our research subjects and approaches, really embracing that intersectional view. That's exactly it. And to help guide this shift, the authors lay out 6 critical dimensions of marginalization. This is where it gets really practical, I think, for anyone thinking about their own research. 6 dimensions. Okay, let's walk through them. What's the first one? First up is demographic marginalization. This is about exclusion based on characteristics like, age, gender, ethnicity, religion, sexual orientation, disability, indigenous identity. The list goes on. Kind of the foundational categories we often think about. Often, yes. And it frequently impacts the other dimensions. Operationalizing it means studies focusing on specific groups, ethnic minorities, women, LGBTQ plus folks, people with disabilities. And why does focusing on this matter so much for organizational theory? Well, multiple reasons. Better decision-making, more creativity, for one, but also fundamental ethical reasons around equity and justice, and simply reflecting the reality of today's diverse workforce. Can you give an example from the research they cite? Sure. There's compelling work showing how, for example, Black women might face more backlash than white women when using assertive language in professional settings. So it's not just about gender, it's that intersection of race and gender. Exactly. It shows the complexity. You can't just look at one dimension in isolation. Okay, that's a powerful illustration. What's the second dimension? Economic marginalization. This deals with exclusion from formal market participation and access to economic resources. It's often really embedded in economic structures and frequently overlaps with other dimensions. How do they suggest we measure or identify this? They suggest looking at individuals earning significantly less than the median income, maybe less than 50%. This includes low-wage workers in sectors like care, food service, hospitality, but also people in the informal economy. And why is studying this group so crucial for management theory? Because our understanding of even basic organizational processes is incomplete if we ignore the perspectives of low-income workers. They're often the targets of organizational change, yet their voices are rarely central to the theories guiding that change. That makes sense. We need to understand the whole system. Any examples here? Yeah, research highlighting how things like algorithmic management in the gig economy can create real economic precarity, particularly for workers who are already marginalized in other ways. It shows how technology impacts different groups very differently. Right, a critical insight for today's economy. Okay, dimension 3. Educational marginalization. This is about having significantly less education than what's typically valued in a society, or facing barriers to getting more education, or even the stigma attached to that status. And this is overlooked too. Hugely. Think about it. A large chunk of the population in many countries, maybe those with a high school degree or less, they're almost invisible in management research compared to, say, MBA holders or PhDs. So we're missing a huge part of the picture. We are. Education often gets treated just as a control variable in studies, masking important differences. We need research looking at, for instance, the challenges faced by highly capable individuals who lack formal credentials, or how AI might impact jobs requiring different educational levels. Especially how it intersects with economic and demographic factors too, I imagine. Absolutely. It's all connected. Okay, number 4. Geographic marginalization. This focuses on communities excluded because of their location. Think remote, rural, underdeveloped regions, places with limited access to resources, infrastructure, basic services. So not just developing countries broadly, but specifically disadvantaged areas within or across countries. Exactly. It's about the lack of access tied to location.
Studying these contexts is vital because it reveals what researchers call institutional voids, places where the usual supports for business or life are missing. And it pushes us beyond Western-centric views. Definitely. It forces us to confront global challenges and see how organizational principles play out differently. There's fascinating research, for example, on factory workers in southern China. Oh, yeah? It showed how, counterintuitively, providing more privacy could actually boost productivity for workers who were marginalized geographically, educationally, and economically. It challenges simple assumptions. Wow, okay. That really underscores the value of looking at these specific contexts. What's number 5? Cultural marginalization. This is maybe a bit more subtle. It's about the exclusion of people who lack certain cultural resources or capital. Like what kind of resources? Things like language proficiency, specific local knowledge, even styles of self-presentation or, tastes and preferences that align with the dominant culture. It happens when people deviate from what's considered the norm. Why is this important for organizations? Because cultural capital is a huge factor in social mobility. And again, it often intersects with other marginalizations. Understanding it helps inform policies aimed at genuine inclusivity. Is there a good example of this? Yes. A really powerful one is research on first-generation college students from working-class backgrounds in American universities. Okay. The universities often emphasize independence and self-reliance, but students from more interdependent cultural backgrounds can struggle with that emphasis, even if they're academically gifted. The cultural mismatch itself becomes a barrier. That's stark. It shows how organizational culture isn't neutral. Okay, the last one. Number 6. Social marginalization. This is about social distance. Being disconnected from networks, particularly from elites or those who control access to resources like information or opportunities, it's about lacking social capital. So being on the outside looking in terms of influential connections? Pretty much. It relates starkly to things like social isolation, which can mean less access to good job networks, quality schools, mentorship, all those things that social connections facilitate. And we see this in research. Yes, there's award-winning work, for instance, showing how women entrepreneurs can be socially marginalized when they're denied things like third-party referrals or endorsements, which are crucial for business growth. It highlights how critical networks are. Okay, wow. Those 6 dimensions provide a really comprehensive framework. It sounds like a huge agenda for the field, but you mentioned the article sees some positive signs. Yes, definitely. They actually did a content analysis of recent articles in ASQ itself from 2019 to 2023. And what did that show? It showed a really promising trend. While studies looking at just one dimension of marginalization were common initially, the proportion of articles looking at multiple intersecting dimensions has grown significantly. So, more intersectional work is getting published in top journals. It seems so. It suggests the field is starting to embrace that complexity more, moving beyond single-issue studies. They're seeing more recent work that decenters elites, too. That's genuinely encouraging. Are there other positive trends beyond ASQ? Yeah, they mention things like the Responsible Research in Business and Management Network, which aims to connect research more directly to societal needs. Okay. And more diversity-focused conferences, specific mentoring programs, specialized academic gatherings on topics like globalizing theory or migration, plus dedicated research centers focusing on things like gender and the economy. So, there's definitely momentum building, but I imagine challenges remain, especially for researchers trying to do this kind of work. Absolutely. The authors are realistic about that. They note that while journal editors seem generally open, reviewers can sometimes still resist studies set in unconventional empirical settings. Especially if they tackle multiple dimensions of marginalization. That can amplify the perceived unconventionality, yes. There's also what they call a theoretical contribution biases, meaning that because so much foundational theory is built around elites, it can be genuinely harder for research on marginalized groups to neatly connect back to and build upon that existing literature in ways reviewers expect. So the existing framework makes it harder for different kinds of knowledge to fit in easily. That can be a hurdle, and related to that is a generalizability bias. You touched on that earlier. Right. A study on, say, migrant farm workers might wrongly be seen as less generalizable or broadly relevant than yet another study on Fortune 500 executives, even if the farm worker study offers far more novel theoretical insight. So the call to action extends to reviewers too. Very much so. They urge reviewers to really interrogate their own potential biases
questions to ask why generalizability or theoretical fit might be discounted more readily for studies of marginalized populations. And this shift also has implications for how we do research, doesn't it? Methodologically. Yes. It likely means a greater need for methods like in-depth fieldwork, field experiments, and comparative approaches like qualitative comparative analysis or QCA methods that are really good at capturing context-specific richness and complexity across different cases. But critically, it's not about sacrificing quality. Not at all. The point is underscored. High-quality, rigorous research on marginalized populations is absolutely essential to actually strengthen the field as a whole. So, looking ahead, what's the author's hope for the future of organizational research? They express a clear hope for the next decade, envisioning that, say, the 80th volume of ASQ will really mark a milestone in mainstreaming theory and evidence relevant to all populations, marginalized, elite, and everyone in between. And making this sustainable means actively rewarding this broader scope of research. Exactly. Through publications, yes, but also awards, appointments to editorial boards, editorships themselves. Creating that positive feedback loop will build collective expertise and lead to, frankly, better theories, more robust, more rigorous, and more relevant. And that relevance extends beyond academia, doesn't it? Absolutely. This isn't just an internal academic debate. A stronger focus on marginalized populations in our research leads directly to better, more informed, more inclusive policy recommendations. Right, where traditional research might have little practical advice to offer on tackling certain inequalities, this kind of work can actually help design more effective interventions. Precisely. It connects theory back to lived reality and the potential for positive change. So as we wrap up, maybe a final thought for you listening. As you reflect on all this, how might you apply these ideas, maybe in your own thinking, your own learning, or even your research if you're on that path? Yeah, what assumptions about who matters in organizations might you challenge? How can you consciously seek out perspectives and knowledge from beyond that traditional elite lens? Something to really consider as we try to build a more complete and ultimately more human understanding of the organizational world we all inhabit. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আজকের আলোচনাটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সায়েন্স কোয়ার্টারলি মানে সংক্ষেপে এএসকিউ জার্নালে প্রকাশিত একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করে। আর এই সারসংক্ষেপটা তৈরি করা হয়েছে একটা বৃহৎ ভাষা মডেল বা এলএলএম ব্যবহার করে। হ্যাঁ, এএসকিউ তো ম্যানেজমেন্ট গবেষণার জগতে খুবই পরিচিত আর প্রভাবশালী একটা জার্নাল। FT50 তালিকাতেও আছে। একদম, মানে এখানে কিছু প্রকাশিত হওয়া মানে সেটার গুরুত্ব অনেক। অবশ্যই। প্রবন্ধটার লেখক হলেন পেনসিলভেনিয়া ইউনিভার্সিটির ড্যামন জে ফিলিপস। আর তার সাথে আছেন ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি বার্কলে থেকে অরুণা রঙ্গনাথন। তাদের কাজটা পড়লে বোঝা যায়, মানে গভীরভাবে পড়লে বোঝা যায় যে প্রজ্ঞা, সহানুভূতি বা মানুষকে বোঝা এগুলো আসলে অপটিমাইজ করার বিষয় নয়, এগুলো যাপনের বিষয়। ঠিক বলেছেন, খুব সুন্দর একটা ভাবনা। তাই যারা শুনছেন তাদের অনুরোধ করব, আপনারা এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা নাই করুন, একটু সময় বের করে এই অসাধারণ প্রবন্ধটা পড়বেন। লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া থাকবে। হ্যাঁ, পড়াটা জরুরি। আজকের আলোচনাটা আমরা সাজিয়েছি মূলত তাদের কথা ভেবে যারা একাডেমিক গবেষণায় নতুন, হয়তো নিজেদের কাজ শুরু করতে চলেছেন আর এই লেখার মূল ভাবনাগুলো সহজে ধরতে চান। বেশ, ভালো উদ্যোগ। চলুন শুরু করা যাক। আচ্ছা, তাহলে প্রবন্ধটার মূল কথাটা কি, মানে কি বলতে চাইছেন লেখকরা? মূল যুক্তিটা হলো ব্যবস্থাপনার গবেষণা হিস্টোরিক্যালি মানে ঐতিহাসিকভাবে মূলত সমাজের এলিট বা অভিজাত অংশের দিকেই বেশি মনোযোগ দিয়ে এসেছে। এলিট এলিট বলতে এখানে কাদের বোঝানো হচ্ছে? হ্যাঁ, লেখকরা এখানে খানের 2012 সালের কাজকে উদ্ধৃত করে বলছেন, এলিট মানে হলো তারা যাদের কোনো না কোনো গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের ওপর, সেটা ক্ষমতা হোক, অর্থ বা সামাজিক যোগাযোগ, অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণ বা প্রবেশাধিকার আছে। আচ্ছা, কিন্তু শুধু এদের ওপর ফোকাস করলে সমস্যাটা কোথায়? সমস্যাটা হলো এতে ব্যবস্থাপনা বা সংগঠন কিভাবে চলে তার একটা খুব একপেশে বা সীমিত ছবি আমরা পাই। পুরো ব্যাপারটা বোঝা যায় না। তার মানে এতদিনকার তত্ত্বগুলো আসলে একটা ছোট অংশের মানুষের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তৈরি। হ্যাঁ, অনেকটা সেরকমই। লেখকরা বলছেন এর বদলে আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত
প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দিকে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, আচ্ছা, এরা কারা? প্রান্তিক মানে হলো তারা যারা সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, ভৌগোলিক বা সাংস্কৃতিকভাবে এই এলিটদের থেকে এবং তাদের সম্পদের নাগাল থেকে বেশ খানিকটা দূরে। মানে অনেকগুলো দিক আছে প্রান্তিকতার। ঠিক। লেখকরা এখানে 6টা দিকের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন: জনসংখ্যাতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক প্রান্তিকতা। বেশ বিস্তৃত ধারণা, কিন্তু এই ফোকাসটা পাল্টে প্রান্তিকদের দিকে আনাটা জরুরি কেন? এলিটদের নিয়ে গবেষণা করলে কি অসুবিধা? জরুরি কারণ প্রান্তিক মানুষদের জীবনে যে ধরনের বাধা, সামাজিক কলঙ্ক বা বৈষম্যের সম্মুখীন হতে হয়, সেগুলো এলিট কেন্দ্রিক গবেষণায় প্রায় ধরাই পড়ে না, উপেক্ষিত থেকে যায়। ঠিক। আরেকটা বড় ব্যাপার হলো, এলিটদের অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি তত্ত্বগুলো তো আসলে পৃথিবীর খুব কম সংখ্যক মানুষের জন্য খাটে। তাহলে সেগুলোকে সার্বজনীন বলে চালানোটা কতটা যুক্তিসঙ্গত? এতে জ্ঞানের সাধারণীকরণ খুব সীমিত হয়ে পড়ে। এটা তো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট। আচ্ছা, এখানে ইন্টারসেকশনালিটি বা ছেদনশীলতার একটা ধারণার কথাও তো আছে মনে হয়। একদম, খুব জরুরি একটা ধারণা। এর মানে হলো মানুষের জীবনে প্রান্তিকতা শুধু একটা দিক থেকে আসে না। যেমন ধরুন, একজন প্রান্তিক মহিলা, তার অভিজ্ঞতা শুধু মহিলা হওয়ার কারণে বা শুধু কম আয়ের কারণে তৈরি হয় না। দুটোই একসাথে কাজ করে। হ্যাঁ, বা আরও অনেক পরিচয়, যেমন তার জাতিগত পরিচয়, ভৌগোলিক অবস্থান, এগুলো সব মিলেমিশে তার অভিজ্ঞতায় প্রভাব ফেলে। প্রবন্ধেও একটা উদাহরণ আছে। কি রকম? যেমন ফিলিপস 2005 সালে শুধুমাত্র উঁচু পদের মানে এলিট মহিলা আইনজীবীদের নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। কিন্তু সেই গবেষণা দিয়ে তো নিম্ন আয়ের মহিলা বা অশ্বেতাঙ্গ মহিলাদের অভিজ্ঞতা বোঝা যাবে না, কারণ তাদের প্রান্তিকতাটা একাধিক দিক থেকে আসছে। ঠিক তাই, তাদের চ্যালেঞ্জগুলো, তাদের লড়াইটা অন্যরকম। এই একাধিক পরিচয়ের মিথস্ক্রিয়া বোঝাটাই হলো ইন্টারসেকশনালিটি। আচ্ছা, কিন্তু একটা প্রশ্ন মনে আসছে, এতদিন ধরে কেন তাহলে গবেষণাটা এলিটদের দিকেই ঝুঁকেছিল? এর কারণ কি? লেখকরা সেটারও কিছু সম্ভাব্য কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন, এলিটদের সম্পর্কে তথ্য বা ডেটা পাওয়া তুলনামূলকভাবে সহজ। সেটা ঠিক। আবার জার্নালগুলোতে রিভিউ করার যে প্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়া, সেটাও হয়তো করত না করত এই এলিট কেন্দ্রিক গবেষণাকেই বেশি জায়গা দিয়েছে। কিন্তু এখন কি অবস্থাটা পাল্টাচ্ছে? হ্যাঁ, একটা আশার আলো দেখা যাচ্ছে। লেখকরা ASQ জার্নালেরই সাম্প্রতিক কিছু বছরের মানে 2019 থেকে 2023-এর প্রকাশনা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে প্রান্তিকতার একাধিক মাত্রা নিয়ে গবেষণা করার প্রবণতা বাড়ছে। ওহ, এটা তো ভালো খবর। হ্যাঁ, বিশেষ করে 2023 সালে দেখা গেছে এই ধরনের ইন্টারসেকশনাল গবেষণা প্রায় একক মাত্রার গবেষণার কাছাকাছি চলে এসেছে সংখ্যায়। একটা ইতিবাচক পরিবর্তন তো বটেই। দারুণ। এবার আসি নতুন গবেষকদের কথায়। যারা সবে গবেষণা শুরু করছেন, তাদের জন্য এই পুরো আলোচনাটা কিভাবে প্রাসঙ্গিক হতে পারে? দেখুন, যারা নতুন গবেষণা করছেন তাদের জন্য এটা খুব জরুরি। প্রথমত, এটা তাদের গবেষণার প্রশ্ন বাছার সময় নতুন করে ভাবতে সাহায্য করে। কাদের নিয়ে গবেষণা করব? শুধু কি সহজলভ্য ডেটার দিকে ছুটব, নাকি আরও গভীরে যাব? একদম। দ্বিতীয়ত, এটা প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলোর সম্ভাব্য সীমাবদ্ধতা আর পক্ষপাত সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। মানে, আমরা যে থিওরিগুলো পড়ছি সেগুলো হয়তো সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। ঠিক। আর তৃতীয়ত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এটা আরও বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক, সমাজের বৃহত্তর অংশের মানুষের জীবনকে স্পর্শ করে এমন প্রভাবশালী গবেষণা করার সুযোগটা দেখিয়ে দেয়। তার মানে মূল কথাটা হলো, গবেষণার পরিধিটা যদি আমরা এলিটদের গণ্ডি পেরিয়ে প্রান্তিক মানুষের অভিজ্ঞতা পর্যন্ত বিস্তৃত করতে পারি, তাহলে আমাদের তত্ত্বগুলো আরও শক্তিশালী হবে, আরও বাস্তবসম্মত হবে, আরও প্রাসঙ্গিক হবে। এবং এর মাধ্যমে হয়তো আমরা সেই সব কমিউনিটির ভেতরে সহনশীলতা, তাদের টিকে থাকার লড়াই, তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা, এইগুলোও জানতে পারব। একদম, যা হয়তো এতদিন আমাদের চোখেই পড়েনি। শেষে একটা প্রশ্ন রেখে যাই সবার জন্য, একটু ভাবার মতো প্রশ্ন। আচ্ছা, ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে নতুন, সবচেয়ে কার্যকর কৌশলগুলো কি সত্যি বড় বড় কোম্পানির বোর্ডরুমে তৈরি হয়, নাকি সেগুলোর জন্ম হয় আসলে একেবারে প্রান্তিক মানুষদের জীবনে, প্রয়োজনের তাগিদে, নিত্যদিনের লড়াইয়ের মধ্যে? ভবিষ্যতের গবেষণা কোথায় তার আসল অন্তর্দৃষ্টি খুঁজে পাবে, এটা কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন।
আবারও বলছি, আরও গভীর উপলব্ধির জন্য মূল প্রবন্ধটা অবশ্যই পড়া উচিত। লিঙ্ক শো নোটসে আছে। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। नमस्कार। आज की ये चर्चा असल में एक बहुत ही जानी मानी मैनेजमेंट रिसर्च जर्नल है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली। उसी में छपे एक लेख का लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM बेस्ड सारांश है। ये जर्नल एकेडमिक जगत में मतलब काफ़ी प्रतिष्ठित है, FT50 लिस्टेड है। और इसके लेखक हैं डेमन जे फिलिप्स, जो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से हैं, और अरुणा रंगनाथन, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कली से। सच कहूँ तो इस लेख को जब गहराई से पढ़ते हैं तो ये एहसास होता है कि ज्ञान, सहानुभूति और जो मानवीय समझ है ना, वो सिर्फ ऑप्टिमाइज करने की चीज़ नहीं है, उसे जीना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। तो हमारी गुजारिश है, आप चाहे चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, पर प्लीज़ इस बहुत अच्छे से लिखे गए और काफ़ी कठोर लेख को पढ़ने के लिए समय ज़रूर निकालें। लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ज़रूरी रिसर्च पेपर को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए समझाएं जो एकेडमिक रिसर्च में नया है और अपनी रिसर्च जर्नी बस शुरू ही कर रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। तो जो मुख्य आइडिया है वो ये कि मैनेजमेंट रिसर्च ने पारंपरिक रूप से मतलब ज़्यादातर एलीट्स पर फोकस किया है, यानी वो लोग जो संगठनों में पावरफुल पोजीशंस पर हैं या जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस काफ़ी हाई है। तो क्या इस वजह से हमारी समझ कुछ हद तक सीमित हो गई है? बिल्कुल, लेखकों का यही मुख्य तर्क है। वो कहते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी को वाकई आगे बढ़ाना है तो हमें उन आबादियों पर, उन पॉपुलेशंस पर ध्यान देना होगा जो कई अलग अलग पैमानों पर हाशिए पर हैं, जैसे कि आर्थिक, शैक्षिक, भौगोलिक, फिर वो डेमोग्राफिक, सांस्कृतिक और सामाजिक भी। हाँ, क्योंकि ये जो समूह है ये अक्सर ऐसी बाधाओं का या कलंक और भेदभाव का सामना करते हैं जिन्हें जब हम सिर्फ एलीट पर फोकस करते हैं तो नजरअंदाज कर देते हैं। तो क्या इससे हम संगठनों की पूरी तस्वीर देख पा रहे हैं? नहीं, और यहीं पर ये लेख एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ या कई अवसर प्रस्तुत करता है। ये हाशिए पर पड़े इन ग्रुप्स पर ज्यादा ध्यान देने की बात करता है और खास तौर पर एक इंटरसेक्शनल नजरिया अपनाने की। मतलब ये देखना कि हाशिए के अलग अलग आयाम कैसे एक साथ काम करते हैं। इसका मकसद सिर्फ मैनेजमेंट रिसर्च का दायरा बढ़ाना नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ की जो अलग अलग सच्चाइयां हैं उन्हें बेहतर ढंग से समझना है। बात सिर्फ समावेशिता की नहीं है, बल्कि तर्क ये है कि सिर्फ एलीट पर फोकस करने से हमारे जो समझ है ना प्रक्रियाओं की, वो अधूरी रह जाती है, सिद्धांत कमजोर हो जाते हैं। ये तो एकेडमिक रिसर्च में जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मौजूदा लिटरेचर में एक बड़ी कमी, मतलब एलीट पर जरूरत से ज्यादा फोकस, उसे उजागर करता है। पहचाने हैं जिन पर रिसर्चर्स ध्यान दे सकते हैं। पहला है जनसांख्यिकी, मतलब डेमोग्राफिक, जैसे उम्र, लिंग, जातीयता वगैरह के आधार पर बहिष्कार। इसका एक उदाहरण है चैन और एनटीबी का अध्ययन कि कैसे टीएसए में काम का असमान बंटवारा जेंडर असमानताओं को बढ़ाता है। अच्छा। दूसरा है आर्थिक, मतलब फॉर्मल मार्केट या आर्थिक संसाधनों तक पहुंच न होना, जैसे कम आय वाले समुदाय। अच्छा, तो ये सिर्फ आय या जेंडर तक ही सीमित नहीं है, मतलब और भी आयाम है। हाँ बिल्कुल। तीसरा है शैक्षिक, यानी जिनकी पढ़ाई कम हुई है या शिक्षा तक पहुंचने में बाधाएं हैं। चौथा भौगोलिक, जैसे दूर दराज के ग्रामीण या अविकसित इलाकों में रहने वाले समुदाय। इसका उदाहरण बर्नस्टीन का दक्षिणी चीन की इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रियों पर किया गया अध्ययन है। पांचवा है सांस्कृतिक, मतलब जिनके पास सांस्कृतिक संसाधन या पूंजी की कमी है, जैसे भाषा अलग होने या सामाजिक व्यवहार की वजह से बाहरी समझा जाना। और छठा है सामाजिक, यानी जरूरी सोशल नेटवर्क या संसाधनों वाले लोगों से दूरी होना। तो क्या लेख ये कह रहा है कि इन आयामों को बस अलग अलग देखना काफी नहीं है, ये एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं? हाँ बिल्कुल सही। यहीं पर वो इंटरसेक्शनैलिटी या प्रतिच्छेदन का आइडिया आता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आयाम आपस में कैसे जुड़ते हैं और किसी व्यक्ति के अनुभवों को कैसे खास शक्ल देते हैं। मिसाल के तौर पर एक कम आय वाली महिला का अनुभव सिर्फ महिला होने या कम आय होने का जोड़ नहीं है, बल्कि इन दोनों पहचानों का जो अनोखा संगम है वो एक बिल्कुल अलग अनुभव बनाता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है,
क्या हाशिए पर पड़े समूहों का अध्ययन करना मतलब प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल नहीं है? डेटा इकट्ठा करना ही अपने आप में एक चुनौती हो सकती है। हाँ, ये बात सही है। और ये नए शोधकर्ताओं के लिए एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। अभिजात वर्ग पर डेटा अक्सर आसानी से मिल जाता है और जो पहले से स्थापित सिद्धांत है उन पर काम करना शायद ज़्यादा सुरक्षित लगता है। हाशिए पर पड़े समूहों का अध्ययन करने के लिए अक्सर आपको फील्ड में जाना पड़ता है, ज़मीनी स्तर पर काम करना पड़ता है, नए तरीके अपनाने पड़ते हैं और हाँ, रिव्यू प्रक्रिया में भी शायद कुछ प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। ये तो है, लेकिन इसका फायदा शायद कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है ना? मतलब हमें ऐसे सिद्धांत मिल सकते हैं जो ज्यादा मजबूत हों, ज्यादा लोगों पर लागू हो सकें और जो असल दुनिया की समस्याएं हैं उनसे ज्यादा जुड़े हुए हों। बिल्कुल, और जैसा कि लेख में भी कहा गया है, इससे हमें असमानता से निपटने के लिए बेहतर पॉलिसीज, बेहतर नीतियां बनाने में भी मदद मिलती है। तो संक्षेप में अगर कहें, हाँ, तो संक्षेप में ये लेख मैनेजमेंट रिसर्च के दायरे को बढ़ाने का एक बहुत जरूरी आह्वान है कि उन समूहों को शामिल किया जाए जिन्हें पारंपरिक रूप से अनदेखा किया गया है और खास तौर पर हाशिए के कई आयाम जहां मिलते हैं उस इंटरसेक्शन पर ध्यान केंद्रित करके। और वो लोग जो अपनी शोध यात्रा बस शुरू ही कर रहे हैं, उनके लिए ये लेख दुनिया को देखने का और ऐसे जरूरी सवाल पूछने का एक नया नजरिया देता है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। हाँ, और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए कि जब कोई अपनी रिसर्च जर्नी शुरू करता है तो वो अपने काम में इन हाशिए के आवाज़ों और अनुभवों को कैसे केंद्र में ला सकता है, भले ही उनका चुना हुआ फील्ड पारंपरिक रूप से एलीट पर ही क्यों ना केंद्रित रहा हो। ये सोचने लायक सवाल है। बिल्कुल, पूरे लेख का लिंक शो नोट्स में है, इसे पढ़ना जरूरी समझा जाना चाहिए।